आइए हम लोग फिर से महावतार बाबा को याद करें, जहाँ से क्रिया योग का ज्ञान आया। ये क्रिया का ज्ञान है क्या? जितने भी प्रॉफिट, अवतार, पैगंबर हुए हैं, सभी लोगों ने वही शिक्षा दिया है। क्या शिक्षा दिया है? कहते ने कहा हम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्मा का स्वरूप क्या है? जो ब्रह्मा कहते हैं क्या? ये इनका सृजन से मतलब है। ये सृजन क्या होता है? जब इस में हम ये वाबिल जोड़े, जिसको री कहते हैं। ये री, जब हम इस सब में री जोड़ते हैं तो श्री होता है। री का अर्थ है पवित्र। री का अर्थ होता है पवित्र। जब री का अर्थ पवित्र है ये, तो इससे हम जोड़े सा को। सा क्या है? जीवन। जीवन क्या है? जीवन है सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में प्रकट हो रहा है। जब ये अनुभव हो जाए कि ये पवित्र है, ये जब पवित्र ये अनुभव हो गया, तो हमें जो ज्ञान होता है जनलोक का ज्ञान। जनलोक का ज्ञान क्या है? देखिए, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, ये पांचवें स्वर्ग का ज्ञान है। इस बार छठा स्वर्ग आता है तपोलोक, फिर आता सत्यलोक। तो इसका अर्थ है सृजन। कि सिर से पैर की उंगली तक जो जीवन है पवित्र है। ये जैसे अनुभव हुआ, तैसे हमारा पूरा बुद्धि में जनलोक का ज्ञान आ जाता है। और जनलोक के ज्ञान आते ही पता चलता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान है, ये पता चलते ही अपना कॉन्फिडेंस आ जाता है, कुछ भी असंभव नहीं है। इसको कहते हैं सृजन। तो ब्रह्मा काम सृजन से संबंधित और सृजन की क्रिया लगातार। तो मानव जीवन का लक्ष्य अहम ब्रह्मास्मि, हमारे ब्रह्मा के बीच दूरी शून्य हो, ये मुख्य लक्ष्य। सब कैसे होगा? ये आराम से क्रिया योग का अभ्यास करिए। क्रिया का अभ्यास करते हुए अपने आप हो जाता है। क्रिया का अभ्यास कैसे करें? इसमें डिवोशन, चलो कोई सिखाएगा। इस समय न तो स्वामी तेजस्वी हैं, न परमहंस योगानंद, न लहरी महाशय, ये सब लोग तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन हैं, ये दिखता नहीं किसी को। चलो कोई व्यक्ति आ गया, जैसे जो परमहंस योगानंद थे, लहरी महाशय दिखाई नहीं पड़ते थे। अमेरिका में स्वामी तेजस्वी भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। परमहंस योगानंद सारा कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन सुनिश्चित है कि लहरी महाशय भी वहाँ थे, तेजस्वी भी वहाँ थे। ऐसे यहाँ पर हम आपको क्रिया योग के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये सुनिश्चित है कि हम सब लोग हैं। महावतार बाबा भी हैं, लहरी महाशय भी हैं, ये ज्ञानावतार तेजस्वी भी, परमहंस योगानंद, और पीछे चले जाइए जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, भगवान राम और कृष्ण, सब हैं यहाँ पर। और कहाँ पर है? हर जगह है। अब इसको विश्वास ना हो तो खोजेंगे ही नहीं। जब ये विश्वास हो गया कि हम मरेंगे, जब मरेंगे विश्वास हो गया, तो फिर हर शब्दों का अर्थ गलत लगने लगा। जैसे डेथ, जो डेथ है, इसका अर्थ क्या लगाते हैं? मृत्यु। ऐसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि जन्म हुआ, ठीक है, तो जन्म के बाद हम बने रहेंगे, ये हम मानते ही नहीं। लहरी महाशय यहाँ पर है, हमें विश्वास ही नहीं। एक तेजस्वी यहाँ पर है, महावतार बाबा हैं, और जितने पैगंबर हो चुके जो असेंडेड मास्टर हैं। पैगंबर की कई अवस्थाएं हैं जो केवल स्थिति को प्राप्त हो चुके, सब यहाँ पर हैं।
तो ये जब मानते ही नहीं तो आपको दिखेंगे नहीं। हमारा जन्म होता है, मृत्यु संभव नहीं, क्योंकि परब्रह्म ही सब रूपों में है। परब्रह्म मरते नहीं हैं। होली साइंस का पहला सूत्र है, परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। जब परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं तो जन्म होता है तो मृत्यु होगा नहीं। लेकिन हम मान लिए हैं कि मृत्यु होता है, इसे डेथ का अर्थ हमने मृत्यु लगा दिया, जबकि इसका अर्थ होता क्या है? इसका अर्थ होता है गॉडेस। गॉडेस क्या होता है? गॉडेस और गॉड में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। हम गॉड को गॉडेस के रूप में मानते हैं क्योंकि गॉडेस में एक मदर का भाव आता है। तो DEA का अर्थ गॉडेस होता है। इसमें TH का मतलब सुनिश्चित। जब TH लगा दीजिए तो चीज जो सुनिश्चित है जो कही जा रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हमारा जन्म हुआ, जन्म हुआ किस लिए? हम अनुभव करें कि हमारा अस्तित्व सिर से पैर की अंगुली तक अगर हम ब्रह्मास्म है तो ब्रह्मा का वो रूप जो माँ के रूप में ज़्यादा नज़दीक होता है, इससे हमारे गॉडेस के बीच में भी दूरी नहीं है। यही जन्म का लक्ष्य है। लेकिन चूंकि जन्म के बाद मृत्यु हमने मान लिया है, इसे डेथ का अर्थ हमने मृत्यु कर दिया है, जबकि डेथ का अर्थ मृत्यु नहीं है। डेथ का अर्थ है कि गॉडेस के रूप में अपने को अनुभव करिए। हम ब्रह्मा के रूप में अनुभव करिए। तो ब्रह्मा किससे प्रकट हुए? उसको पकड़िए। ब्रह्मा जिससे प्रकट हुए उसको पकड़िए तो ब्रह्मा तो आ ही जाएंगे। इसे गॉड और गॉडेस का ये जो एक भेद किया गया, उसके पीछे यही है। तो अच्छी तरह से याद रखिए कि जो चीज़ बताई जाती है, अगर आप इसको मानेंगे नहीं तो इसको अभ्यास नहीं करेंगे। अभ्यास नहीं करेंगे तो जो क्रिया योग का इफेक्ट है दिखेगा नहीं। इसे अभ्यास अवश्य करिए। तो चलो हम क्या करें अभ्यास में? क्रिया योग में अभ्यास ही लिखा हुआ है। अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। हम लोग खाना खाते हैं, जिह्वा के तल पर स्वाद की अनुभूति, किसी भी स्वाद की निंदा न करिए। ये सुनिश्चित करिए जिसका स्वाद ले रहे हैं उसकी हानि नहीं किए हैं, उसके लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब नहीं किए हैं। जैसे मटर का स्वाद ले रहे हैं तो हरी मटर ना हो, क्योंकि हरी मटर जब तोड़ते हैं छीमी, तभी पेड़ पका नहीं, अभी पेड़ मैच्योर हो रहा है। जब पेड़ मैच्योर हो गया तो छीमी पीली हो जाती है, पेड़ पीला हो जाता है। फिर पेड़ को काटने पर उसमें कोई संवेदना नहीं होती है। फिर पीली मटर को खाइए। जब पीली मटर को खाएंगे तो जो स्वाद आया उसको स्वीकार करिए। इस तरह से जितनी भी चीज़ों का हम स्वाद लेते हैं, सुनिश्चित करिए जिसका स्वाद लेते हैं उसकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब नहीं की गई। इसलिए ज्ञान की संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति वो क्या है? फसल जब पक जाएगी तब काटेंगे, काट करके तब मड़ाई करेंगे, बीज इकट्ठा करेंगे और अच्छे बीजों को सेलेक्ट करके उसको फिर बोने के लिए रखेंगे। क्योंकि बीज हमसे कहा नहीं था खा लो, मैंने अपना बुद्धि लगा के खाया उसकी उन्नति के लिए। ये उसकी उन्नति हमने क्यों किया? उसने तो कहा ही नहीं था। क्योंकि हमें उससे प्रेम है। इसे बीज न खाते तो उसमें घुन लग जाता, बीज मिट्टी में मिल जाता तो वनस्पति जगत से और उसका स्तर नीचे हो जाता। तब करें क्या हम? इसलिए अच्छे बीज को बोने के लिए रखे कि बीज का अस्तित्व भी बना रहे, बाकी बीज को हम खाए, उसको मानव तत्व में बदल दिए। इस सिद्धांत के द्वारा जब हम कुछ भी खाते हैं तो हर खाद्य पदार्थ का स्वाद को ईश्वर की अनुभूति मानिए। और परब्रह्म सभी रूपों में विद्यमान है। इस सिद्धांत को स्वीकार जब करते हैं, आंखों से जो भी हम देखें उसी भाव में देखें। भले समझ में ना आए, समझ बाद में आएगा। चलो किसी को नहीं देखते, झगड़ा है,
बड़ी दिक्कतें हैं। किसी को देखो तो मारने दौड़ता है, इसे हम देखेंगे नहीं। तो ठीक है, अपने हाथ को देखिए, अपने पैर को देखिए। देखने का तरीका कड़ापन ढीलापन करना, जो रिचार्जिंग करते हैं, हाथ पैर को हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, अपने को ही देखिए, अपनी अनुभूति करिए और स्वीकार करिए परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह से जो अपनी अनुभूति हम लोग किए, इस प्रकार जो स्वतः की अनुभूति किए, उस अनुभूति को पूरी तरह से स्वीकार करिए कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इसको स्वीकार करने के लिए अभ्यास करते हैं। भ्रूमध्य साधना जितना अच्छा होगा, स्वीकार करने में आसानी होगी। श्वास दर्शन जितना अच्छी तरह से करेंगे, स्वीकार करने में आसानी होगी। जो कान बंद करके सुनते हैं, जितनी एकाग्रता से सुनेंगे, स्वीकार करने में आसानी होगी। सिर और रीढ़ को प्रतिपल याद रखें कहाँ है, तो स्वीकार करने में आसानी होगी। इस तरह से सिर से पैर की उंगली तक इसमें जितनी क्रियाएं होती हैं, आंखों से देखकर, कान से सुनकर, पता चला कि हम किसी की बात सुने, सुन करके हमने बताया, उससे कहा कि आपने गलत सुना, ये तो मैंने कहा ही नहीं था। ठीक है भाई, हमारे सुनने में डिफेक्ट है और रोज़ 10 कमेंट होते हैं, हम सह नहीं पाते हैं। अभी नए नए पौधे हैं साधना में, नया नया अभ्यास हो रहा है, ये तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलो हम अपनी आवाज़ सुनेंगे, कान बंद कर लेंगे, एक वाइब्रेशन की आवाज़ आती। ऐसे ही नाक के द्वारा अपने अस्तित्व की गंध, जिह्वा के द्वारा जो कुछ खाते पीते हैं सभी स्वाद का सम्मान, स्पर्श के द्वारा जो अपना स्पर्श करते हैं, जब उठते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते हैं, जितने प्रकार का परिवर्तन होता है, ये सब स्पर्श क्रिया है, सभी का सम्मान है। इस तरह से हम अभ्यास करेंगे हम, तब पता चलेगा कि ये डेथ का मतलब मृत्यु नहीं है। ये अपने अस्तित्व को हम गॉडेस के रूप में अनुभव करें। गॉडेस को मेल फीमेल ना कहिए। कोई भी बाप माँ की तरह सेवा कर सकता है, कोई भाई, कोई भी मेल जिसको कहते हैं माँ की तरह हो सकता है। इस तरीके से हमारा देवत्व का वो रूप जिसमें मदरली अफेक्शन हो। मदरली अफेक्शन का व्यापक रूप क्या है? सृजन की क्रिया। हम विचारों का सृजन करते हैं, होली साइंस की तरह किताब बन गई। भावनाओं का सृजन करते हैं, विचार का सृजन करते हैं। सृजन कई तरह के होते हैं। हम कुछ लेकर के मिट्टी का घर बना रहे हैं, मिट्टी को पका करके ईंट बना रहे हैं। हमने नियम बना लिया कि आज से हम पहाड़ नहीं काटेंगे, अपनी जगह की मिट्टी को लेकर के ही सड़क बनाएंगे। सड़क बरसात में ढह जाती है, मिट्टी को पकाएंगे हम। कहाँ से पकाएंगे? खूब जंगल लगाएंगे, जो पेड़ सूखेगा उस लकड़ी से पकाएंगे। जितने जानवर हैं, गाय है, भैंस है, ये सब इनके जो गोबर होते हैं उसकी उपली बनाएंगे, उससे पकाएंगे। पका करके मिट्टी को और ज़्यादा पका देंगे तो झामा हो जाएगा, काला काला हो जाएगा, तो वो हो जाता है पत्थर की तरह। उससे सड़क बनाएंगे, फिर पहाड़ नहीं काटेंगे। याद रखिए, सिर से पैर की उंगली तक अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लेने पर इतना ज्ञान आता है कि पहाड़ सुरक्षित, नदियाँ सुरक्षित, समुद्र में दिक्कतें नहीं आएंगी, किसी प्रकार का न्यूक्लियर प्रयोग नहीं होगा समुद्र में, एटॉमिक एक्सप्लोजन नहीं करेंगे। जो हम वेपन बनाते हैं उसका जो जांच करते हैं ठीक है कि नहीं, समुद्र में गिराते हैं, कहीं पहाड़ी पर गिरा दिए, तो सब नहीं करना होगा। तो इस तरीके से हम जहाँ रहते हैं उसी जगह की चीज़ों के इस्तेमाल करके सारा काम करेंगे। वहीं पेड़ लगाएंगे, फसलें उगाएंगे, सब चीज़ मिलेगी। जीवन का लक्ष्य क्या है? महल बनाना नहीं। फिर महल बनी क्यों है? ये आपके लिए बनी, कहाँ पर रहेंगे? हमको तो ज़रूरत नहीं। हम जैसे रहते आप रह ही नहीं पाएंगे। हम तो बिना कमरे के रहते। आपको अगर सबका कमरा हम हटा दे दीवार, तो आप तो एक दूसरे से डिस्टर्ब हो जाएंगे।
तो हमें तो मकान की आवश्यकता नहीं है, ये सब बनाया गया है आप सब के लिए। इससे का आप रहेंगे और समझेंगे कि डेथ का अर्थ मृत्यु नहीं है। याद रखिए, केवल जन्म होता है, मृत्यु नहीं होती है। अगर मृत्यु होती है तो ये सूत्र होली साइंस का पहला कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, ये सूत्र सही नहीं है। ये सूत्र सही नहीं, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक महाअवतार बाबा के निर्देशन में लिखी गई है और लिखने वाले स्वामी गिरी, जिनको ये शक्ति प्राप्त थी कहीं भी प्रकट हो जाए, अदृश्य हो जाए। जो शक्ति लाड़ी महाशय को थी वही इनको प्राप्त थी। इसलिए याद रखिए, और ये भी याद रखिए, अगर एक बार क्रियायोग में आने का अवसर लग गया और पूरा अभ्यास नहीं कर पाए, हो सकता है कई जन्मों तक अवसर न लगे। आपको कोई दिक्कत है, अभ्यास नहीं कर पाते, हमसे बताइए, किसी प्रकार की परेशानी, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन आ गए हैं तो खूब अच्छी तरह अभ्यास करिए। Now let us try to understand how to increase devotion in Kriyayoga practice, because through the Kriyayoga practice we start realizing ultimate truth hidden in each and every creation. Creation means sound. You are creating sound. We are creating different things. We are writing some letters, words, sentences. What is truth hidden in each letter, in each word, in each sentences? What is truth hidden in any creation? Without truth we cannot survive. Our nature is to seek truth. Therefore we need Kriya Yoga. Then how to increase devotion in Kriya Yoga? Therefore in the word Kriya Yoga, everything is hidden. Try to understand what is Kriya Yoga, you will know everything. Kriya means all kind of activities. Kriya means all kind of activities. Whatever activities you experience, practice oneness with that. Practice oneness with that means state of yoga. State of yoga means time zero, distance zero. It means if we say it is I and it is some kriya is going on, distance between two should be zero. This is the distance. How to understand this? Let us think that we are eating some food. We are having some taste on the tongue. Try to appreciate each and every taste as presence of God. With one condition, if you are consuming some food, grains, seeds or fruits, make it sure that you are not disturbing the life cycle of that species. For example, we are eating green peas. You see, green peas is in the middle of life cycle. When we sow the peas, that is the real color is yellow. There are many varieties, but I mean mature. When we are taking immature peas, that mature peas, what is mature peas? When you sow it, you will get plant of peas. Immature, you will not get plant. If you are consuming the food which is immature, grains, like corn is not reached to the mature stage. We are using before that. Therefore, grains has not reached to the mature stage. We are consuming that. That is not allowed. When we are going to disturb the life cycle of any things to increase our strength, we cannot increase perfect strength. There will be some problem. By disturbing the life cycle of the plant or anything, we cannot feel our life cycle is full of bliss, peace and joy. Therefore, we should have this crops like wheat, corn, soya, any crops should be mature in the field. When the mature crops are there,
Then you can cut it and collect the seed. The best seed you should keep for cultivation. Sow it again, produce more and more seed. Because seed has not said that please come and eat me. It is we, by using our intellect reasoning power, we are consuming the seeds. But make sure that crop should be ripe. Then you are harvesting it, you are collecting the seed, you are eating it. When you are doing this, then try to observe this phenomena. All kind of grains, all kind of seeds, all kind of ripe, mature fruits. If you are consuming it, you must appreciate taste is presence of God. Do not practice likes and dislikes. And try to consume the complete content of the fruits. Something you cannot chew, you cannot make a paste, you can leave it. Suppose that there is a one fruit, that is the walnut. Walnut inside you can consume, you can eat, but external shell is very hard. You cannot eat it. Try to break the shell, wash it, soak it in the water and boil it. You will get tea-like some content. By using that, you will increase strength of your bone and all mucosa lining of the digestive system, and our arteries, inner lining will be stronger. Your eyes, we want minerals, you will have the minerals. Some fruits are very hard shell. You can break the hard shell, you can soak it, you can boil it, you can make tea. But inside, you can chew it, you can make a paste and eat. This is the important point. Okay, all right, now we have decided to appreciate all taste on the tongue, whatever you feel. But we are not able to do that. We find very difficult certain tastes we do not like. Then try to increase more concentration on Brahmad. How to meditate on Brahmad, how to meditate on breath, how to meditate on holy vibration, closing ears, how to meditate on head to toes, feel more and more. Then you will get a strong willpower to practice easily. That is the important point. In the same way, you have to use your eyes. When you are using your eyes, according to the principle of holy science, Parabram has become all. You see each and every person, all are manifestation of Parabram. Wherever you are going, try to look anybody like that, they will say, oh, you are very bad, why you are gazing me? Then, what you will do? Anywhere, suppose that you are placing your attention of vision on any object, for example, human being. That human being objecting, then what you will do? You will find it a difficult task. Then try to close your eyes, fix gaze on the vibration we observe in the space in front of forehead. Accept that within that all human beings exist. Within that vibration all creations exist. In the same way, if you are interacting with the people, because God has become all, you want to talk, you want to discuss, but there is fight. In the process of talking, there is an egoistic life, likes and dislikes. It is very difficult to have perfect unity on the platform of hearing and talking. Then close your ears. Listen vibration, there is no fight in this. Within each and every vibration, all prophets of all ages exist. Within each and every vibration, what you listen when ears are closed, the creations of all cosmos exist there. In the same way, within each and every radiation, what you see in this space, creations of the all complete cosmos exist. This is the important point. Then the next, now you have got a point how to practice Kriya activities on the platform of vision, on the platform of hearing, on the platform of taste. Now the nose is smell. Try to appreciate the smell of your whole head to toes. Each and every smell what you feel is purest of pure. Therefore in this way,
practice oneness with all activities, all kriyas we experience on the platform of sense organ within. That is the important point. Moment you practice it, then what you will realize, you are able to create anything. What is the creation? Creation is associated with the consciousness of Brahma. Is Brahma exists in USA, in Canada, in Japan, everywhere. Brahma exists within each and every person, within each and every creation. Therefore there is a creation. There is a creation in plants, in animals, within us. If Brahma is technical name, like water, like hydrogen, like oxygen, they exist everywhere. In the same way Brahma exists everywhere. Not in the way people think, universal concept of Brahma. Then what is your aim of life? Aham Brahmasmi. We have to experience oneness with the Brahma, oneness with the science of creation. That is called the Kriyayoga. You have to practice oneness, unity with all kind of kriyas. Kriyas are associated with the Brahma. All right? The Brahma's all activities associated with the Srijan. Srijan is the Hindi term. When you write this, this is the Srijan, and how we pronounce in English. In fact, difficult to pronounce completely. You cannot say Srijan, you cannot say Srijan, something in between. Then what is this Sa? We pronounce like this, we write like this. When put under this, what does it mean? It represents purity. Sa means the life. Life has been head to toes. Moment you feel it is purest of pure. Head to toes is purest of pure creation. How you will understand it? We feel impure. Moment you practice oneness with all changes on the platform of senses, then you will realize head to toe is purest of pure. Then what will happen? Then you will experience this J-A-N-A. That is called Jana. What is Jana? That is the Janaloka. What is Janaloka? Fifth heaven. Bhuloka, Bhuvar, Swar, Mahar, Janaloka. Moment you experience Janaloka awaken inside, then what we will realize, we are not human beings. We are children of God. Moment you realize we are children of God, problem is over. Then you will never say this is any work is hard or this is impossible. You will never say it. Some time may take, because the world is full of Maya. You have to appreciate Maya. Therefore you should wait. All things will be done in the best way. It may take some time, that's all. If the purpose of Kriyayoga practice is to experience Aham Brahmasmi, I and God are one, that is very easy to practice it. Therefore decide from today not to create injury to any plants. Do not cut any green plant. If there are grasses, how to cut the grasses? Cut only upper area. Do not cut the grass in such a way that the leaf of the grass should be reduced to minimum, so that there is no photosynthesis. Leaf of the grass where chlorophylls are there, chlorophylls, they are used for making the food. In your park you are just taking the complete grass, leaving very little. This should not be there. Try to have little good size of the leaf. If leaf is going very long, that will become turned into yellow, then photosynthesis process will be disturbed. Then you cut it on the surface. Therefore in this way you should learn the science, how to protect grasses, how to protect animals and crops. By practicing this Kriyayoga more and more, you will know how to protect animals, how to protect mountain. At present mountains are being crushed. We are accumulating these small stones to make the road. We do not need it. Okay, all right. How to make a road? It's a very easy job. This is the place I want a road. Take the clay from here.
scratch the clay, do not make ditch near the road, scratch clay and try to make a platform. But that platform, when the rain is coming, it's just going out. They try to mature, try to ripe the clay, make a bricks, try to ripe little more. There will be black bricks like a stone. Use that for the roads. Why we are going to disturb the mountain? This is the important point. Moment you practice Kriya Yoga sincerely, all the disorders, what is happening on the surface, cutting the mountain, destroying all kind of ecosystem, cutting the green trees, green crops, so many things are happening. Even in Ayurveda, we are growing the herbs, we are cutting the green herbs. It is not allowed. This is the important point. Therefore, our aim is to practice Kriya Yoga should not be stopped. You should practice sincerely with all devotion. But we need somebody, some to guide. Holy Science gives very clear instructions. In the procedure, what is given? Regard the Guru with the deep love. But there is no Guru. If you accept anybody as Guru, you have to follow. But don't find Guru, then how to recognize Guru? Therefore, there is a successive practice. Oh, I love this ring. A ring will protect me from all kind of problems. Okay, all right, I am going to have a piece of wood in my pocket. It will protect me. All right. But try to show your devotion with your ring and the wood. By showing devotion in the stone and the wood, whatever you have, your devotion will grow. One day you will realize, no, better than this light, what you see in front of the forehead, that is mixture of light and darkness, that is the Savior. When you close your ears, what you listen vibration, that is the Savior. When you observe the breath, watch the breath, that is the Savior. Then we came to know, oh, this is the Savior. Somebody will say, take some water from the river, this is the holy river. I will take water in my pocket, I will be saved. No problem. We do not have any concept, we are not able to recognize Guru, we are not able to recognize God. They take water in a vessel. Live with that. Try to worship it. Take any stone or anything, worship it. Take a piece of wood, worship it. After this, slowly will develop a concept that by concentrating on breath, you will have higher devotion in God. By concentration on Brahma, you will have higher devotion in God. By practicing recharging and different techniques, what you practice is the higher form of devotion in God. By practicing more and more, one day you will realize, oh, it is very great when you practice complete love with the two opposite. What is the two opposite? One is called the darkness, ignorance, and next is called the awakened. Awakened consciousness and ignorance consciousness. How to love both? Then you will realize, oh, that's a great thing. Ignorance and awakened both are at nearest of near. Inside, this is the brain area, this is the spinal cord area. Inside there is a neurons, and for neurons, if there is no activity of neurons, legs cannot walk. Through the eyes we cannot see, through the ear we cannot listen, through the tongue we cannot taste, through the nose we cannot smell. Therefore these neurons, you can say awakened structure. Because it attracts quickly, which is called the word. Word is called the presence of God in the cosmos. It attracts quickly. Word is an omnipresent consciousness, we call it holy vibration, we call it symbolic Om. It is present everywhere. This neurons having ability to attract it.
This attraction, it activates neuron. And other part, they are neutral, inactive. Inactive is called ignorance. Therefore, by practicing service, try to do service more and more until you feel each and every point of head to toe is throbbing. You are feeling heat in nails and toes and feet and calf muscles, thighs and back, abdomen and chest and arms and neck, face, head. The moment you feel that heat, that is very important. In that, what you realize, you have reduced distance between ignorance and awakened stage. Let us say, this ignorance and this is the awakened state. There is distance. We are not able to move the leg. All right? Now let neurons become active. Oh, I start feeling my leg now. Feeling or how to feel more? Practice, offer service. When you give service more and more, we start feeling pain. That is not the pain. Perception of pain, loving pain, is called oneness with the ignorance and awakened consciousness together. Then distance becomes zero. Therefore, within head to toe you will find two kinds of creation. One is the neurons, which is very nearest of near to awakened stage, because it is having power to attract the Om vibration. Then it is able to radiate Om vibration to all parts, so the spinal nerve, cranial nerve. The all other parts, they are numb, they don't have any consciousness. Then consciousness is created. Now I start feeling my leg and arms. Then having oneness with the head to toes, through the practice of Kriyayoga, we are practicing oneness with the ignorance and awakened consciousness together. That ignorance is called the gu, darkness. Awakened is called the ru, light. Therefore, light and darkness together, that is called the Guru consciousness. By practicing this sincerely, you are practicing Guru consciousness at nearest of near. By practicing again and again, you will realize, oh, Lahiri Maharaj is here. Oh, he is Mahatar Babaji. He is Yukteswar Giri. You will find the prophets of all ages and times, ages and lands. They are at nearest of near to you. They are present in your being, within you. How you will realize their presence? By practicing this again and again. चलो लिखा हुआ है कि बिना गुरु की कृपा से कुछ होता नहीं, गुरु तो मिला नहीं, क्योंकि आप इन सबको देखते नहीं। एक हम हैं आपके पास, हम आपको बिगड़ते रहते हैं, आप डरते रहते हैं, तो बड़ा तालमेल ठीक नहीं है। तब क्या करें हम? तो अभ्यास करिए। आपके अंदर कुछ इग्नोरेंस चीज़ें हैं, अज्ञानी चीज़ें हैं, कुछ ज्ञान वाली हैं। तो जो अज्ञानी चीज़ें हैं और ज्ञान वाली कैसे समझें हम? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, इनके अंदर एक क्षमता है, ब्रह्मांड में जो ओम वाइब्रेशन है, इनकी शक्ति को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्ट करके स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व के द्वारा भेजते हैं अंगों में। जो पैर एकदम इग्नोरेंट था, इसको कुछ पता ही नहीं था, वो शक्ति गई थी, हिलने लगा, इसमें कुछ मूवमेंट आ गया। तो मन और बुद्धि के प्रयोग से हमने मन बुद्धि को समझाया कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो पैरों को जब कहा मन अनुभव करो, तो स्वभाव में करो, परब्रह्म ही पैर हो गए हैं। तब बढ़िया से रिचार्जिंग करना शुरू किए। रिचार्जिंग नंबर 2 कर रहे हैं कि परब्रह्म की अनुभूति कर रहे हैं। इस तरीके से आप देखेंगे जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता, और अवेकन कॉन्शसनेस, हम दोनों के साथ जुड़ गए। दोनों के साथ जुड़ गए तो एक गु, एक है रू। गु कहते अंधकार और रू कहते प्रकाश। तो हम तो गुरु से जुड़ गए। उससे जुड़ते जुड़ते तब पता चला, अरे गुरु तो यहाँ भी है, महाअवतार बाबा तो हर जगह है, लाड़ी मासा भी है, युक्तेश्वर गिरी जी भी हैं,
यही नहीं, जितने अवेकेंड मास्टर हो चुके हैं, जो केवल स्टेज को प्राप्त हो चुके हैं, सब तो आपके पास हैं। तब पता चलेगी, इसके पहले नहीं। अभी तो दिक्कत है, क्या करें, खुजली हो रही है, अरे इसको क्रीम लगा लो, ऑर्जोन खा लो, दवा खा लो, स्टेरॉइड खा लो, एलर्जी हो गई। अभी तो इस चक्कर में पड़े हैं ना। इसे क्रिया का अभ्यास पूरी लगन से करिए और खाना पीना अपना थोड़ा सा बदलने का प्रयास करिए।